Hello and welcome to another session at Traveler Webinars. I'm your host Devansh Kalra, and today, ladies and gentlemen, we'll be talking about one of the most hot-selling destinations in tourism market, which is Maldives. And as we know, like अभी जैसे travel season आने वाला है, especially अभी wedding season आएगा, and so winter season आएगा, anniversaries. So the couples basically look forward to going to say, I would say, couples destination जो होती है हमारी basically which comes under Maldives, Thailand, Bali and what not. So आज हम उसी के एक सीरीज के कंटिन्यूएशन में, जैसे हमने आपको पहले वाले सेशंस में बाली और थाईलैंड के बारे में ट्रेन किया था, राइट? कौन कौन सी एक्सक्लूसिव दिस डेस्टिनेशन एंड क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप ट्रैवलर के साथ बुक करते हैं, एंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग जो भी आपको मॉलडीव्स के बारे में जानना है, दिस इज द सेशन फॉर यू. Right. So, first of all, we have Sparsh Batra, who is basically the Maldives destination expert here at TravPlan. He takes care of all the Maldives bookings that comes and goes around TravPlan. So, hi Sparsh, can you hear me? Hi Devansh, yes, I can hear you. Right, perfect. And then we have Ashish Yadav, who is the general manager at TravPlan, who also looks over Maldives, right? And so, Ashish, I hope you can hear me. Hi Devansh, thank you so much. Yes, I can hear you. Hi everyone else. Right, perfect, perfect. So without any further ado, I think we can start with the webinar. So I'm just going to share my screen and Spurge will take you through the presentation. And for everyone else's reference, should you have any questions, like अगर आपको कोई भी questions होंगे, चाहे वो किसी स्लाइड से रिलेटेड हो, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कुछ इंक्लूजन से रिलेटेड हो, ग्रुप क्वेरी से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, उसको हम लाइक वेबिनार के एंड में एंटरटेन करेंगे बेसिकली. Right, so I'll just start presenting my screen and Spurge can take your. So, hi everyone. As Devansh stated, my name is Parsh. I am the destination expert over here in Maldives. Devansh, can you move to the next slide? Okay, so we'll be talking about Maldives from the scratch, right? What exactly Maldives is and why is it famous for, right? So, talking about Maldives, like why do people visit over here? It is majorly famous for honeymooners and these family members who want to explore the luxury, the scenery, and the marine life, right? They visit Maldives, right? Can we move to the next slide? Yeah. So talking about Maldives, the best season to visit Maldives is basically November to April, and the cheapest months to be there is from July and August, right? Next we'll be coming to the visa process for Maldives. Can you shift the slide? Yes. So visas for Indians basically is for zero cost, right? The prerequisites for the same is basically that your passport should have a validity for 6 months before the date of travel. The visitor should have an air ticket, and apart from this, there should be enough money during the stay. Apart from this, there should be a voucher that you should be having before going ahead and planning your trip to Maldives. Can you move to the next slide? Yeah. So how to reach Maldives? Another big question because there are different modes of transfers of different resorts, right? One of them is speedboat, the other one is seaplane, and the other one is domestic flight plus speedboat transfer. तो यूजुअली लोगों को थर्ड वाले में एक कंफ्यूजन रहती है कि ये कब यूज में आता है, डोमेस्टिक फ्लाइट एंड स्पीडबोट ट्रांसफर. तो व्हेनेवर अ प्रॉपर्टी इज एक्चुअली फार अवे फ्रॉम माले सिटी आपका वहाँ का मेन एयरपोर्ट पड़ता है, तो उस केस में डोमेस्टिक फ्लाइट एंड स्पीडबोट ट्रांसफर इज प्रेफर्ड. फॉर एग्जाम्पल, टू गिव यू एन एग्जाम्पल, देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज विला पार्क. वो थोड़ा माले सिटी से दूर पड़ती है, तो इन दैट केस देयर इज अ डोमेस्टिक फ्लाइट दैट यू हैव टू टेक फ्रॉम माले सिटी and you end up at an airport near to Villa Park. Through there, it's a 10-minute speedboat transfer. तो आप वहां से रिजॉर्ट पहुंच जाते हो. Next slide. Yeah. The major categories that Maldives has, मतलब famous किस वजह से है? It is famous for its water villas basically, right? Beach villas and water villas. बीच विला में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं आपकी. देयर इज बीच विला विद पूल, वाटर विला विद पूल, देयर इज जकूजी बीच विला, जकूजी वाटर विलास, different kinds of categories are there.
that are there in Maldives. Talking about the types of meal plans. So basically अगर आप Maldives जा रहे हो तो you are staying at a particular island, right? तो वहाँ पर obviously आपको खाने के लिए meal plans already लेकर जाना ज़्यादा preferable रहता है. It is cheaper plus convenient as well. So there are different kinds of meal plan for different types of people. There's a half board, there's full board, and then there's all inclusive. तो लोगों का ये क्वेश्चन रहता है यूजुअली कि हाफ बोर्ड क्या है, फुल बोर्ड क्या है और ऑल इंक्लूसिव क्या है. तो वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. हाफ बोर्ड इज बेसिकली वेयर इन यू गेट ब्रेकफास्ट प्लस अ लंच और अ डिनर. तो देर आर 2 मील्स इंक्लूडेड इन दिस. देन कमिंग टू द नेक्स्ट इज फुल बोर्ड, जिसके अंदर आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड. एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल इंक्लूसिव. सो ऑल इंक्लूसिव बेसिकली इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. व्हाई? बिकॉज इसके अंदर आपका लिकर एंड ऑल द अदर ड्रिंक्स आर इंक्लूडेड. So it includes breakfast, lunch, dinner, and your drinks. Yeah. So this is the main part that I wanted to talk about. The focus selling properties that we guys have in case of Maldives, right? So हम लोग जिस properties पे सबसे ज्यादा focus कर रहे हैं आज की डेट में वो है अदारन, ओब्लू की प्रॉपर्टीज, एटमॉस्फेयर बेसिकली, खुशीफारो, फुरावेरी एंड ऑल दीज. मैं आपको एक एक करके इनके डिटेल्स में बता दूंगा कि व्हाट इज देयर यूएसपीज एंड व्हाई वन शुड गो अहेड एंड परचेज दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. सो इन केस ऑफ अदारन, अदारन में कोई पूल कैटेगरी नहीं है. इट्स अ 5-star प्रॉपर्टी. इट इज रिसेंटली शिफ्टेड टू अ 5-star प्रॉपर्टी. देयर यूएसपीज की बेसिकली इनके पास में इंडियन फूड की अवेलेबिलिटी होती है. They've got an Indian chef, plus apart from this, they have an Indian exclusive restaurant, which is Sufura. Apart from this, the liquor, the beverage that these guys offer is quite amazing. They've got 101 cocktails, and it is also famous for its prestige water villas. Coming to Hadaran Fushi, so Hadaran Fushi is again a 4-star property. The USP of this property is basically कि आपको dolphin cruise complimentary मिल जाता है. प्लस यू गेट अ फ्री स्पा, यू गेट गुड इंडियन फूड. सो उदाहरण की कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप पिक करते हो तो वहाँ पे इंडियन फूड की अवेलेबिलिटी रहती है. प्लस देयर हनीमून इंक्लूजन इज क्वाइट अमेजिंग. कैन यू शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड? या वाडू. सो वाडू इज अ प्रॉपर्टी विच इज फेमस फॉर इट्स वाटर विलास. तो ये प्रॉपर्टी में कोई भी बीच विला नहीं है, राइट? It has got 3 major categories: sunrise water villa, sunset water villa, and romantic water villas. So sunrise and sunset, both of them includes your swimming pool in it, right? Sunrise and sunset आपको खुद ही बता रहा होगा कि एक sunset facing होगा, एक sunrise facing होगा, right? Their USP is कि आप यहाँ पर 1 night या 2 night का stay भी ले सकते हो, right? There's just one point that you need to remember कि वाडू के अंदर there's no children allowed. So if you are planning with a family, so this is not a preferred property. This is actually a property which is famous for couples only. They've got good honeymoon inclusions, and apart from this, they also have jacuzzis, bathtubs, pool in their room categories. Coming to the next one, Ranali. So Ranali is one of the cheapest options that you can go ahead for. अगर मान लो कल को आपका बजट है 160, 170, 180, इतने में आप कोई प्रॉपर्टी सर्च करते हो तो यू कैन गो अहेड विद रनाली. इट्स अ बजटेड प्रॉपर्टी. 2 ही कैटेगरीज है यहाँ पे. एक आपका क्लासिक रूम है एंड एक वाटर बंगलो है. फेमस फॉर वेज फूड एंड जैन फूड. अच्छा, वन मोर थिंग टू एड ऑन टू, अदारन ऑल्सो प्रोवाइड्स जैन फूड, राइट? तो इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट फॉर एनी कस्टमर जिनको सिर्फ जैन फूड खाना है तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे फुलफिल हो जाती हैं. कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yeah, now we are at atmosphere. So atmosphere सबको पता है is one of the famous and the most selling properties, one of the most selling properties, right? इनकी भी 4 categories हैं, मतलब इनके भी 4 अलग अलग resorts हैं जिनके regarding we'll be talking. First is Varu by Atmosphere. Varu by Atmosphere is actually a premium property, right? इनके inclusion काफी amazing है. This property has got very amazing inclusions because of which is actually famous in the Indian market. It's a big resort. And they've got lots of food and dining options, which is why it is quite famous. Plus ये आपको sunset fishing, sunset cruise या stargazing cruise, मतलब these are some complimentary activities that the property is offering, because of which eventually अगर आपका customer वहाँ पे जाता है तो he'll enjoy the property a lot. Second is Oblu Select at Samgeli. So this is also a premium property. This property has both the categories in pool villa. So basically दोनों villas के अंदर आपको pool मिल जाएंगे. Plus same चीज, इनके इंक्लूजन्स काफी अमेजिंग है.
फॉर एग्जाम्पल सनसेट फिशिंग यहाँ पर है, देन देयर इज मूनलाइट क्रूज, देयर इज गाइडेड स्नॉर्कलिंग ट्रिप, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस इधर इंडियन फूड थोड़ा मतलब कंपैरिजन में चैलेंजिंग है, बट वैसे यू कैन फाइंड इट ओवर हियर। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? Yeah, I love Fushi. So it's the same. Let's say for example, if you're looking forward for a budgeted property, तो आप I love Fushi आंख बंद करके पिक कर सकते हो। इंडिया के अंदर it has been very famous because ये 4 स्टार में काफी अमेजिंग प्रॉपर्टी है। If you look at the photos of this property, तो you will find कि यार ये 4 स्टार नहीं है, 5 स्टार भी हो सकती है। It has got 2 room categories, एक आपका बीच विला है, एक वाटर विला है। एंड दिस वन स्टैंडर्ड रूम ऑल्सो, बट लोग ज्यादातर उसे पिक नहीं करते हैं। 15 मिनट्स अवे फ्रॉम द योर माले सिटी एयरपोर्ट, तो इस वजह से ये काफी इजी टू गो प्रॉपर्टी भी है, बिकॉज ज्यादा लंबी जर्नी हो जाती है तो इवेंचुअली इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द गेस्ट ओनली। एंड they've got an underwater restaurant over there which is very famous, right? It's not complimentary, but आप बाद में पे करके you can go over there. The next is Cinnamon. Cinnamon is again a brand, and one of the famous property is Cinnamon Valley Fushi. It's a premium 5 star property जिसमें आपको वाटर विलास में पूल मिल जाएगा, राइट। इट हैज गॉट अ सी प्लेन ऑप्शन। सी प्लेन आपको 25 मिनट मैक्सिमम लेगा एंड आपको वो प्रॉपर्टी पे पहुंचा देगा। देन देव गॉट वाटर विला, वाटर प्लंज पूल विद जकूजी एंड एन ऑप्शन फॉर अ हैमक एज वेल, which is समथिंग, मतलब तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आर लुक फॉरवर्ड बाय द कस्टमर्स, तो आप इसको यूज करके आगे सेल कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। Elaidu. It is also a budgeted property, right? It has got both beach villas and water villas. Same 150-160 की रेंज के अंदर आपको आराम से ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। Veg food and Jain food is available, which is one of the USPs, and it is also near to the airport. Coming to one of the premium properties, Fushifaru. तो Fushifaru is an ultra luxury property, right? इनके कुछ अच्छे इंक्लूजन्स हैं जिसकी वजह से इट सेल्स द मोस्ट। यू नो, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियंस आपको काफी कम मिलेंगे। देन दे प्रोवाइड अ कॉम्प्लीमेंट्री फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट एंड एन इंडियन थाली। प्लस इनका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है कि जब आप वहाँ पे पहुंचते हो तो यू गेट अ बटलर सर्विस। अ पर्टिकुलर पर्सन इज असाइन टू यू, जो पूरा टाइम आपके साथ बीच विलास में भी और वाटर विलास में भी कंटिन्यूएशन में रहेगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉप हिम अ टेक्स्ट एंड ही विल कम एंड हेल्प यू आउट, right? They've got proper Indian and Jain food, and there's one more thing, when you enter over there तो आपको bongs के साथ में एंट्री मिलती है, which is actually something जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। Yeah, another property, Digu Faru. So Digu Faru is a 5 star property. it has got both मतलब दोनों रूम कैटेगरीज में आपको पूल्स मिल जाएगा, सी प्लेन ट्रांसफर्स है। अच्छा, इट्स अ बिग प्रॉपर्टी, मतलब आपको जो इनके रूम मिलेंगे वो काफी स्पेशियस है, and they've got a bathtub as well in the room as well. They've got complimentary floating breakfast, sunset fishing trip, and a lot of free excursion in the property. Then talking about Makunudu, once again it's a budgeted property. 3 nights अगर कोई कपल प्लान कर रहा है तो वो 70,000 के अंदर अप्रोक्सीमेटली ये प्रॉपर्टी बुक कर सकता है। इनका एक इन हाउस, मतलब सो देव गॉट इन हाउस रीफ एंड नेचुरल सैंड बैंक, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर अ लॉट ऑफ इंडोर गेम्स अवेलेबल। नेक्स्ट, मेदुफुशी। सो मेदुफुशी इज वंस अगेन अ बजटेड प्रॉपर्टी आपकी। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि व्हेन यू गो अहेड विद स्पीड बोट तो 2.5 घंटे का आपका ट्रैवल रहता है, बिकॉज ऑफ विच लोग इसे लेना इतना प्रेफर नहीं करते हैं। बट इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो अहेड एंड टेक अ सी प्लेन कोड। सी प्लेन आपको 200-400-500 थोड़ा और महंगा पड़ेगा, पर्टिकुलरली फॉर अ कपल आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इवेंचुअली यू कैन गो अहेड एंड बुक दिस प्रॉपर्टी, एंड इट इज एन अमेजिंग प्रॉपर्टी। बजटेड के अंदर आपको बीच विलास और वाटर विलास मिल जाते हैं, वेज फूड मिल जाता है, देन देयर आर लॉट ऑफ एक्सकर्जन एक्टिविटीज एज वेल जो इसमें वी कैन इंक्लूड। नेक्स्ट इज हेलिंगलीज। हेलिंगलीज वंस अगेन अ 4 स्टार प्रॉपर्टी। थोड़ा सा ये आपको 180 से लेकर 210 के बजट में मिलेगा, बिकॉज द प्रॉपर्टी इज एक्चुअली अमेजिंग। इट्स अ 50 मिनट्स जर्नी स्पीड बोट से आपकी, एंड द मरीन लाइफ ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द आइलैंड इज क्वाइट अमेजिंग. It has got an Indian Ocean night that happens every Friday, because of which the property is actually quite famous. So Villa is actually the brand which is very famous in India. तो विला नॉटिका हो गया या विला पार्क हो गया, यहाँ पे आपको बहुत इंडियंस जाते हुए मिलेंगे। एंड विला नॉटिका के अंदर इन द बीच कैटेगरी आपको पूल मिल जाता है,
वैसे देयर इज नो पूल देयर इन द प्रॉपर्टी, बट इट्स अफोर्डेबल 5 स्टार प्रॉपर्टी। 2.5 लाख से लेकर 270 के बजट में आपको अप्रोक्सीमेटली ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इट हैज गॉट वेराइटी ऑफ फूड देयर, प्लस बहुत अमेजिंग क्यूजीन्स है, काफी वेराइटी मिल जाएगी आपको क्यूजीन्स के अंदर भी। एंड इट्स अ स्पीड बोट ट्रांसफर फ्रॉम द एयरपोर्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज विला पार्क। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था दैट विला पार्क इज अ प्रॉपर्टी जस्ट गॉट डोमेस्टिक फ्लाइट प्लस स्पीड बोट ट्रांसफर। ये थोड़ा डिस्टेंट है माले सिटी से, तो इस वजह से दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांसफर इज यूज्ड, एंड इट्स वेरी पॉपुलर अमंगस्ट द इंडियन मार्केट। एंड रिसेंटली अपने पूल रूम्स बिल्ड कर रहे हैं, इट हैज नॉट बीन ओपन येट बट दे आर बिल्डिंग इट अप। फुरावेरी, फुरावेरी इज वंस अगेन अ प्रीमियम 5 स्टार प्रॉपर्टी। काफी सारे सेलेब्स यहाँ पे जा चुके हैं, सेलिब्रिटीज हैव वेंट ओवर देयर। इट हैज गॉट वेज फूड एंड जैन फूड, हैमक है आपका वहाँ पे। तो a lot of inclusions are there जिसको a couple if they are going out, if they're going to this resort, can enjoy the particular property. Tusithani, once again a premium property, right? 35 minute seaplane transfer है आपका माले सिटी से, offers butler service, pool villas are available, honeymoon inclusions काफी amazing है, candlelight dinner आपको free मिल जाता है for the honeymooners, and free bicycles are there at the resort. Yeah, talking about why book Maldives with Trafclan, तो one of the major points is that Trafclan is one of the top 3 DMCs in India, right? And हमने recently अभी 5 fan trips conduct करी हैं, wherein we've sent approximately 30 to 40 agents on the particular fan trip. तो if you book with us, आपको आगे जाके opportunity मिल सकती है. Then there is special attention for honeymooners and anniversary couples because आपको inclusions मिल जाएंगे. We've got a lot of property ranges, 50 से ऊपर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड प्रॉपर्टीज है हम लोगों के पास में। कॉन्ट्रैक्टेड रेट्स हैं वेज फूड एंड जैन फूड के लिए। यू गॉट अमेजिंग प्राइसेस प्लस एन अमेजिंग ऑन ग्राउंड सर्विस। तो अगर ऑन ग्राउंड पे भी आपको कोई चेंजेस करवाने हो, कैन हैपन इजीली। So yeah, Ashish will be taking over now. थैंक यू स्पर्श। सो जैसा स्पर्श ने अभी तक सबको समझाया रिगार्डिंग ऑल द रिजॉर्ट्स इन Maldives. So Maldives is as exciting as all the resorts look like, and you can travel to each of the destination, each of the resort, and आपको वहाँ पे बहुत ही अलग अलग लोकल Maldivian cuisines भी मिलते हैं, traditions भी मिलते हैं, and you get a flavor of roughly everything what you want to have in a destination where you are going for leisure majorly. But over years the destination is evolving into different dimensions of travel spheres also. बहुत सारे रिजॉर्ट्स में there are specific places जहाँ पे आप इवेंट्स कर सकते हो, सेटअप्स कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हो, and if you are celebrating anniversary, some small functions, weddings, so Maldives is becoming a top destination for all these events also. Recently, we went to TTM, which is a travel trade mart that happens in Maldives, and we kind of have met roughly each and every property that is there. We've also contacted 6, 7 newer properties to bring into the Indian market, so that there is always an excitement for all of the travel partners that work with us. In case you want to push a newer product into the market, because in newer products you get newer margins, newer you can say revenues and newer avenues of earning money from your side also. It was a really great experience that we had over there, and in addition to it, it was really great to interact and connect with each and every travel partner throughout the Maldivian society. And we also met Visit Maldives because we eventually work with them. In addition to this, we want to specifically focus on one thing, which is group queries. So currently we are very confident, like जैसा मैंने अभी आपको बताया कि Maldives is becoming a go-to destination for multiple things, just apart from being a honeymoon or leisure destination from Indian market. A lot of people go for a lot of specific things, people even go for marriages in Maldives. Obviously the price point is different, but you always have a clientele which can cater to a like varied range of price points as per the requirement. So in group queries, we are very confident, and we have a strong hold in the number of things that we can do into a resort.
Like in some resort, we can arrange a projector. We can also arrange a welcome flag for the group. We can also arrange a specific welcome drink for the group. We can also customize the cards in the rooms if it is a greater than 10 room booking kind of a setup. We can also arrange specific dinner events. We can also arrange dinners by the beaches. We can also arrange specific, you can say, locations where specific events of your trip can be organized. If there are certain small conferences, we also have resorts wherein we can organize conferences for your set of clients, and then in the evening they can relax in the resort and enjoy the breeze of the resort and the view and the experience of the resort. So broadly, we have been catering to multiple group queries currently in like roughly each and every month. So hence we thought that this is the time that we should build this destination from our perspective also strongly into group queries. And hence, I just wanted to say there is nothing else written in the slide of group queries because we are already doing it. And just wanted to emphasize that we can do whatever a group needs in Maldives because of the strong contracting and strong presence we have over there. Apart from this, we are open to ask anything. You can shoot up any question that you have. And thank you so much, Devansh, for hosting it up for us. That was a short, brief intro, but obviously discussion matters. So we are open to anything that you wish to ask. Right. So everyone can just ask their questions in the chat box and Ashish's Perch will answer them one by one. So मतलब कुछ भी आपको अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई क्लाइंट से रिलेटेड है कि मैं इस क्लाइंट को कौन सी प्रॉपर्टी में बेच सकता हूँ, क्या कुछ भी है बेसिकली, तो आप क्वेश्चन सभी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. राइट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपने प्रॉपर्टीज बताई क्या वो आपकी कॉन्ट्रैक्टेड प्रॉपर्टीज हैं? सो आशीष. Yes, there are some of the contracted properties that we have. We have roughly 50 to 60 contracted properties in the Maldivian market, which caters to 95% of the set of properties that sell from Indian market. जो आपने देखी है इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत contracted properties हैं. And if you have any specific property requirement also, you can reach out to your account manager and we would be happy to cater to that. It was a limited space, इसलिए हम सारी properties नहीं दिखा पाए थे because to explain USP of each and every property, it takes time, but we are happy to share anything if you need also, so that you can sell properties better. Perfect, perfect. So the next question is, can you please tell about visa formalities? So talking about visa, as I said earlier, visa is free of cost for Indians. So if there's an Indian traveling, Indian passport holder traveling, so all they have to do is वहाँ पे जाना है. वहीं पर आपका you just have to show them the voucher. Plus apart from this, air tickets and everything and immigration आपका clear हो जाएगा. Then you have to head to the counter. वहाँ पर जब आप काउंटर पे जाओगे तो बेसिकली फॉर एवरी प्रॉपर्टी देयर इज अ पर्टिकुलर काउंटर मेड ओवर देयर. वहाँ पे आपको अपना वाउचर दिखाना है एंड यू विल बी गुड टू गो. Right. So the next question is, can we have the list of the properties which Traflan has? एक second. Can we have the list of properties which Traflan deals have best on budget? So I think the question is, the agent wants the list of all the properties with all the best budgets we have. So so what we can do is, like, I'm just going to share a link in the chat box as well, and we're going to share a document as well. राइट. सो हम क्या करेंगे, हम अभी इस लिंक में आप जाएंगे तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज लिस्टेड है. राइट. आप अगर उस पर रिजॉर्ट की डिटेल्स पे जाएंगे, आपको सारी डिटेल्स एंड सारे प्राइसेस मिल जाएंगे. ऑल्दो विल शेयर अ पीडीएफ सून. राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which property would you suggest to Jain people? So in that case, they can pick Adaran. Plus, apart from this, Pushikaru भी आप ले सकते हो. Villa Nautica भी, Villa की properties you can also go ahead and take. तो यहाँ पे आपको जैन फूड की प्रॉब्लम नहीं आएगी. Right. So एक second. How often do you conduct fam trips? So we often conduct fam trips because we believe that experiencing something gives you a fair chance to sell it better.
जब तक आप वहाँ जाके देखते नहीं हो कि हाउ द एक्चुअल वीजा प्रोसेस और हाउ actually everything in the country is working for making your customers travel to a luxury resort at peace, only then you get the confidence, okay, this is a destination where I can send all of my guests and be at rest. So we truly believe in fam trips. I think this year we have sent roughly 50 plus travel agents to different, I think 7 fam trips till now. One is or might be still in the pipeline till this season of fam trip ends. Then we will come up with next season of fam trip. And this is just specifically for Maldives. We also do fam trips for different destinations that are different. Right. So the next question is, do you conduct bachelorette trips as well? We have not conducted a specifically bachelorette trip as such, but we have conducted group of friends also. So if there is any specific requirement with respect to bachelorette trip, you can let us know. We will be able to cater to that. If that is available in the resort, we will be able to for sure cater to any kind of requirement. Can you explain the child policy in Maldives? So the child policy is actually different for every resort. अब जैसे for example, let's say अदारन कैन हैव फॉर एग्जांपल, अदारन कैन हैव कि वहाँ पर 5 साल तक का बच्चा जो है उसको हम लोग एक इन्फेंट ही मान के चलेंगे, तो इन दैट केस आपका सिर्फ ग्रीन टैक्स लगता है. फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट गिविंग यू अ पर्टिकुलर आंसर, मतलब ऐसे कि प्रॉपर्टी में एक्चुअली है क्या. लेट्स से विला, तो विला के अंदर इट कुड बी कि 12 साल तक का बच्चा कुड बी काउंटेड एज इन्फेंट, राइट. तो इट्स डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी. तो वो जब भी आप कोर्ट लोगे, कोर्ट के अंदर आपका वो क्लियरली मेंशन्ड होगा कि चाइल्ड पॉलिसी एग्जैक्टली है क्या. Right. So the next question is, are there any exceptions for military and military visas, I think? This So practically the rates that we have are for Indian market, and it's completely okay for any specific segment of work also. For visas, as far as I know, there is no specific requirement of military visas or passport holders or any specific demarcation for the same. But we will for sure check it again and we'll let you know if there is anything else that is there for the military visas. Right. So the next question is, what is green tax and how it is like, and what all taxes are there? So there's only one tax in Maldives which is called as green tax. जब आप वहाँ पे जाते हो, when you stay in a particular resort, तो there's this particular tax that you have to pay, which is $6 per person per night. तो let's say if there's a couple going, तो $6 per person per night, और अगर वो 4 रातों के स्टे के लिए जा रहा है, तो $48 he'll be paying for 4 night stay. A couple particularly I'm talking about, right? This is the only tax that a person has to give once you're traveling to Maldives. Right. So the next question is, do we have any fixed departure flights for Maldives? Uh, we can build so if you want so. We already have the pipeline of some fixed departure flights for the month of November and December. So if there's any interest, you can let us know. We can give it on a query basis. Then we will roll out as a product if that sells up. But we do have into our backend. We have not rolled it up to the front end yet. Got it. Perfect. So I think these are all the questions we have as of now, right? So should you have any more questions? अगर आपको लग रहा है आपको अभी भी कुछ questions है या कुछ पूछना है किसी property के बारे में, तो आप स्पर्श को मेल कर सकते हैं. I'm gonna drop his mail ID in the chat box along with the link जहाँ से आप सारे हमारे Maldives की listed properties देख सकते हैं, right? So like I thank everyone for joining in, right? And I hope everyone had a great session. Thank you so much, Ashish and Sparsh, for taking out time to just take our travel agents through this like how to book a Maldives process through TravPlan, right? So I think उनका process मैं कुछ ना कुछ तो I think हर कोई agent session से लेके जाता ही है, right? So again I thank all the agents for joining in. And okay, so one more question is there, need more budget options also for Maldives? So Ashish. Okay. Okay, Sparsh, you will do. Acha. We have multiple budget options in Maldives. So in Maldives, there are two kind of
accommodation types. One is local island accommodations or local hotels that we say, and then there are private island accommodations. So whatever resorts that are usually selling in the market are private island ones that starts from in the current period in December and all it changes, but they start from $1,300 for a 2+2 combo. But we also have budget hotels which are primarily in the local area only, and they are very, you can say, cheap compared to the resort hotel. So you can always mix up the itinerary with 2 nights in the local island and 1 night in the private island, or 1 night in the local island, 2 night in the private island, to make it budget friendly for the end consumer, because you have both of the options in Maldives. Right. I think that was the last question. So yeah, as I was saying, thank you so much, travel agents, for joining in. And as I said, I'll be dropping the mail ID of Spursh and the link through which you can book Maldives packages from TravClan, so that you can just have a look. And if you would have any questions, you can just contact Spursh for it, right? Spursh or your account manager, right? So again, thank you so much, everyone. We'll see you in the next one. Yeah, please like the session and subscribe our channel.